Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we will discuss about the Henderson-Hasselbalch equation and its application. So, Henderson-Hasselbalch equation. This is basically represents the relationship between the pH and the pK value, and then the ionized and unionized form of the drug. ये वो इक्वेशन है कि जिसकी हेल्प से वी कैन कैलकुलेट के हाउ द ड्रग इज़ एब्जॉर्ब, हाउ द ड्रग इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग, और फिर एलिमिनेशन में इसका क्या रोल है. So let's begin with the first slide. That is a brief introduction about the Henderson-Hasselbalch equation. Now Henderson-Hasselbalch equation जो आज हम derive भी करेंगे for the weak acid as well as for the weak basic, क्योंकि most of our drugs they are either weak acid or they are weak basic drugs. So Henderson-Hasselbalch equation represents the relationship between the pH, and it represents the relationship between the pH, pKa value, and the ionized and unionized form of the weak acid as well as the weak basic drugs. जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ये वो इक्वेशन है कि जिसकी हेल्प से आप pH का pKa वैल्यू के साथ, और then you can determine the ratio of ionized and unionized form of the drug at very specific pH. क्योंकि हमारे लिए जो important है that is the pKa value and the pH value. pH value is always again for the solution and pKa value is for the drug. तो pKa value किसी भी drug की it is constant but the pH is changing. So that's why if the pH is changing and the pKa value it is the constant, so pH of the medium is a factor that determine कि ड्रग कितनी आयोनाइज्ड होगी और अनआयोनाइज्ड होगी, and the Henderson-Hasselbalch equation help us to calculate that value. Okay, so one basic principle in this case is the when the pH of the solution is equal to pKa value of the drug, then 50% of the drug will be in ionized form and 50% of the drug will be unionized form. ये दोनों एसिडिक और बेसिक ड्रग के लिए एक सेम प्रिंसिपल हम अप्लाई करते हैं कि when the pH of the solution is equal to pKa value of the drug, the 50% of the drug will be ionized and the 50% of the drug will be in unionized form. Okay, so the first one that is about the to derive the Henderson-Hasselbalch equation for the weak acids, कि कैसे आप weak acid के लिए इसको derive करते हैं, and what is that equation that represents the ratio between ionized and unionized form of the drug. तो सबसे पहले जो है as already mentioned that most of our drugs they are either weak acid and weak bases. So this is the weak acid acidic drug, and the property of the drug or acidic drug ये है कि that donates the proton. So once it donates the proton it becomes H3O, and then this is the ionized form of the drug, that is the basic form जिसको आप कह सकते हैं. So this is acidic form that donates the proton, and this is the proton acceptor. तो ये दोबारा इक्विलिब्रियम में जाएगी, तो दिस इज द प्रोटॉन एक्सेप्टर, दैट वाई इट इज द बेस, एंड दिस इज द एसिड, एंड अगेन दिस इज द बेस बिकॉज इट एक्सेप्ट द प्रोटॉन. Okay, so what is the Ka value? Ka value is equal to the hydrogen ion concentration or H3O and the ionized form of the drug or the basic form of the drug divided by the unionized form of that drug. I mean the जो आपकी weak acid drug है. So if we take the minus log on the both sides, you will have this equation. अगर आप दोनों साइडों पे माइनस log लेते हैं, you will have this equation, and माइनस log of Ka already we know that is equal to pKa, और ये भी माइनस log of hydrogen ion concentration that is equal to pH, and then again this is the minus log of A minus, and this will be equal to plus log of HA, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है और then it will become नोमिनेटर वाली साइड पे ये आएगा तो माइनस के साथ आएगा, फिर इसका माइनस है तो माइनस माइनस दे will become the positive sign. तो इसका ये positive sign आ जाता है क्योंकि ये ऊपर जाता है, I mean कि when it become numerator, the numerator की जो power -1 है इस माइनस log के साथ मल्टीप्लाई होती है, then it become plus log of HA. Okay, so taken together, as I mentioned कि the minus log of K is equal to pKa, and minus log of hydrogen ion concentration H3O that is equal to pH, plus log of the unionized form of the acid and the ionized form of the acidic drug, जो यहाँ पे इक्वेशन आपको यहाँ पे दी हुई है, that is the you can say the
unionized form, and this is the ionized form of the acid. So unionized form and the ionized form आप उसको mention कर सकते हैं. Again अगर यहाँ पे if you retain the pH and you take the log of unionized form of the drug divided by ionized form of the drug, another side it will be a minus, ये minus sign के साथ आ जाता है, and then pKa will remains the same. Okay, so this is the pH, and this will remain the same. Again this is the with the negative sign, और इसको अगर आप नोमिनेटर में ले आते हैं तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम log of माइनस आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द एसिड, that is A, and again this will become the denominator में चला जाएगा because that is HA. So क्योंकि इसकी माइनस साइन है, so it will become HA, और इसका ये माइनस साइन उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, so that will become log of A, that is the ionized form of the drug. Okay, so pH is equal to pKa plus log of the conjugate base, because this was the conjugate base and this is the acid, that is the unionized form, and this is the ionized form. So we can write, in other words, pH is equal to pKa log of the ionized form of the drug and unionized form of the drug. So for acidic drug, this is the equation that is called as Henderson-Hasselbalch equation. The Henderson-Hasselbalch equation for acidic drug is equal to pH is equal to pKa plus log of ionized and unionized form of drug. So if you I mean के the अगर pH is equal to pKa, suppose pH is equal to 3, pKa is equal to 3, so इसको दूसरी साइड पे आप ले जाते हैं, it will become equal to 0, and anti-log of 0 is equal to 1. So in that situation, the ratio of ionized and unionized form of drug will be equal to 1. So that speaks के जब pH is equal to pKa, the ionized and unionized form of the drug या उसकी रेशियो जो है that become equal, the percentage is it become equal. So as the you will increase the pH of the solution, जब acidic drug हो आप pH को increase करते जाएं, this will come again हमारे जो next lectures आ रहे हैं इसमें हम इसको apply करेंगे. As you increase the pH of the solution, the degree of ionization of acidic drug will increase, क्योंकि pH आप increase कर रहे हैं, pH increase कर रहे हैं means आप basic drug को बना medium को बना रहे हैं, so the percentage of ionization of weak acidic drug will be increased and drug will not be able to be absorbed. अगर आप pH को कम करते हैं लो pH के ऊपर, drug will not be able to ionize and drug will be freely absorbed from that membrane. तो इसलिए ये एक चीज़ important है Henderson-Hasselbalch equation कि if the pH of the solution increases, the acidic drug की जो आयोनाइजेशन है ज़्यादा होती है एंड इट इज़ नॉट एबल टू क्रॉस द मेम्ब्रेन, क्योंकि आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग इट इज़ वाटर सॉल्युबल, ये क्रॉस नहीं कर सकती. अगर आप उस सोल्यूशन की पीएच को कम करते हैं एंड ड्रग इज़ वीकली एसिडिक, ड्रग विल नॉट बी इन आयोनाइज्ड फॉर्म and the much percentage of drug will be in ionized form at low pH, and then it will be easily to cross the membrane because it is the unionized form of the drug that crosses the membrane. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो Henderson-Hasselbalch equation हेल्प हमें करती है to correlate the relationship between the pH and pKa and then ionized and unionized form of the drug. Okay, so next is about to derive the equation for weak basic drug, that is Henderson-Hasselbalch equation. Again इसके लिए वही फार्मूला हमने यूज़ किया जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया कि दिस इज़ द कंजुगेट बेस, कि इसको हम कंजुगेट बेस की बिहाफ पे इसका डिसीजन लेते हैं. सो कंजुगेट बेस दिस वन, दिस इज़ द बेस. सो बेस इज़ ए कंपाउंड that basically you can say that accept the proton, accept करता है तो conjugate हमारे पास जो है acid आ जाता है. So this is the conjugate acid, this is the base, and this is the hydrogen that is, you can say, that is taken from the water. Okay, so for weak basic drug, this is the equation for weak basic drugs. Ka is equal to, again, law of mass action, that will be equal to this one, and it will be in denominator. So if we take the minus log on the both sides, again this will become minus log of Ka, this will become minus log of all that equation. And again if we solve, minus log of Ka is equal to minus log of hydrogen ion concentration minus log of B and plus log of BH, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है ऊपर जाएगा, it will become plus. So okay, so क्योंकि इसका जो नेगेटिव साइन है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा and it will become equal to plus. So this is equal to pKa, this will become equal to pH, and log of the conjugate acid,
and this is the log of conjugate acid डिवाइड बाई द बेस, उसके साथ आप इसको डिवाइड करते हैं, क्यों? बिकॉज दिस इज द पॉजिटिव साइन और ये इसका नेगेटिव साइन है, सो इट बिकम डिवाइडेड और इसके साथ प्लस आ जाता है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Again, this is the same equation, that this pKa is equal to pH. Same equation, where pKa is equal to pH plus log of BH, that is the conjugate acid, divided by the base. Okay, so if you keep the pH, I mean the, अगर आप इस pH को एक उसी साइड पे रखते हैं, and then you take this on the other side, pKa minus log of BH plus divided by B. Okay, so the pH is equal to pKa, and this is I mean कि ये डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर में है, तो ये ऊपर आ जाएगा, इट विल बिकम log of b and this will become the denominator, क्योंकि इसके साथ माइनस साइन है, इट विल बिकम bh, तो ये bh में कन्वर्ट हो जाता है। these are very simple log के रूल्स हैं। if you have any question you can mention in the comment section, I will be pleased to answer these questions. Okay, so the pH is equal to pKa log of the base and the log of conjugate acid. So log of base, that is the unionized form, and log of conjugate base, आप देखें उसको conjugate acid जो है, that is BH plus, that is the ionized form, and pH is equal to pKa plus log of unionized divided by ionized form. इसका जो डिफरेंस है फ्रॉम द एसिडिक इक्वेशन, सिर्फ ये इसका इंडिविजुअल जो आई मीन द ओनली डिफरेंस इज कि द पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग ऑफ एसिड में ये आयोनाइज होता है और डिनोमिनेटर में अनआयोनाइज होता है, लेकिन बेस में लॉग ऑफ अनआयोनाइज या नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म जो होती है, ये इट इज़ इन नोमिनेटर and ionized in the denominator. ये difference है, otherwise things are same. So as the pH, if you increase the pH of the if you basically increase the pH of the basic solution, अगर आप basic solution की pH को increase करते हैं, the degree of ionization will decrease. ड्रग ज़्यादा आयोनाइज नहीं होगी, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगी, तो इसलिए वो ड्रग्स जिनकी आप पीएच को इंक्रीज करते हैं और वो बेसिक हो, तो वो अनआयोनाइज्ड रहती है, एंड दे आर वेरी क्विकली अब्जॉर्ब फ्रॉम द मेम्ब्रेन, बिकॉज इट इज़ द अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग दैट इज प्रेजेंट इन दैट कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन। लेकिन अगर आप पीएच को डिक्रीज करते हैं फॉर द बेसिक ड्रग, तो आपकी ज़्यादातर जो ड्रग है इट बिकम आयोनाइज, एंड आयोनाइज ड्रग कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन, तो इसलिए पीएच डिक्रीज करने से बेसिक ड्रग की अब्जॉर्प्शन इंक्रीज होती है, और पीएच को डिक्रीज करने से बेसिक ड्रग की जो आयोनाइजेशन ज़्यादा होती है एंड अब्जॉर्प्शन बिकम डिक्रीजेस. So that is all about the Henderson-Hasselbalch equation for the weak acid and the weak basic drug. The basic concept is how to derive the equation. What is the ratio between the ionized and unionized form when the pH is equal to pK. जब आप acidic drug के लिए pH को डिक्रीज करते हैं तो unionized form of drug is more and it crosses the membrane. अगर आप pH को इंक्रीज करते हैं the ionized form is more and it cannot cross the membrane. लेकिन बेसिक ड्रग्स के लिए जब आप pH को डिक्रीज करते हैं आयोनाइज्ड फॉर्म इज मोर एंड इट कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन, लेकिन अगर आप pH को इंक्रीज करते हैं फॉर द बेसिक ड्रग द अनआयोनाइज्ड फॉर्म इज ग्रेटर एंड इट कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन. तो ये थोड़ा से वो डिफरेंसेस हैं दैट यू शुड नो एज ए स्टूडेंट. So these are the application of the Henderson-Hasselbalch equation. It is helpful to predict the drug ionization and the solubility. It is helpful to optimize the drug absorption, drug distribution के साथ इसका, and drug formulation, stability, product design, drug की जो elimination है, excretion है, and understanding the drug and drug environment interaction. So this equation is very helpful, and as a student you should know Henderson-Hasselbalch equation and how it is derived and what is its application in absorption, distribution and metabolism of drug. So this is all about this lecture, and rest of the regarding the application is ये application क्या है, क्या uses है इसके, that will be coming in the coming lectures. Thank you very much.